Okay, so now we move to the next topic, which is your interaction of radiation with matter. So you have discussed three different kind of radiation, which is important in the nuclear physics. And what are those three radiations? कौन से? तीन रेडिएशन आपने डिस्कस किए ना? कौन से हैं? बीटा गामा। यस, जिसमें से एक रेडिएशन है, बाकी दो पार्टिकल्स हैं, बट हम इसे रेडिएशन कहते हैं. मींस रेडिएशन इज अ वेरी मिसनोमिंग वर्ड. दैट व्हाट इज द रेडिएशन? रेडिएशन यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और यू आर टॉकिंग अबाउट द ड्यू टू द मैटर वेव. तो दो हमारे मैटर वेव हैं और एक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. बट एनर्जी स्केल में दे हैव डिफरेंट वैल्यू. मींस आपका जो अल्फा होता है वो टेंस ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाता है. बीटा होता है वो हार्डली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है. And when you have gamma, that also from 1 or 0.1 mega electron volt to tens of mega electron volt. So that is also having a good amount of energy. But when you have this kind of energy, and if it is being emitted from anywhere, हो सकता है कहीं radioactive decay हो रहा हो, या हो सकता है कहीं sample leak हो गया है. तो we have all these radiations. And when you have such kind of strength, जैसे एग्जांपल के लिए आप अगर विजिबल लाइट का अगर एनर्जी देखते हो तो दैट इज हार्डली ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपका रेड का होता है 2 के अराउंड, और ब्लू और इवन अल्ट्रा वायलेट पे भी चले जाओ तो टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया. दैट्स ऑल. अल्ट्रा वायलेट आपका टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 4 पे तो आपका ब्लू आ जाता है. 4 पॉइंट समथिंग इज ब्लू, 3 पॉइंट समथिंग होता है शायद. 4 के आसपास तो अल्ट्रा वायलेट आना शुरू हो जाता है. तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अल्ट्रा वायलेट. Ultraviolet is so harmful for human beings, then you can imagine a photon having tens of mega electron volt energy. बहुत huge difference है. कहाँ tens of electron volt है, which is harmful, that cause cancer, that make changes to our DNA. Then what could the gamma can do? तो gamma can do even the skin burn. Skin burn तो आपका ultraviolet भी कर देता है. But gamma has a drastic effect. तो आपके सिर्फ डीएनए में ही चेंज नहीं करेगा, आपके स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देगा. तो गामा इज वेरी हार्मफुल. एंड एज you have the means if you have more energy or energy with respect to its current mass, that is also important. If the mass of the particle is very light, then it will move very fast. It has more penetration in the matter. तो बहुत important है कि इन रेडिएशंस को कैप्चर करना, स्टॉप करना. और स्टॉप करने के लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हाउ दे इंटरैक्ट विद द मैटर. अगर वो मैटर में जब एंटर करते हैं, व्हेन दे एंटर इनटू अ मैटर, देन हाउ दे इंटरैक्ट. इफ वी नो द व्हाट इज द इंटरैक्शन प्रिंसिपल, देन वी कैन डिजाइन कि हमें किस तरीके से मटेरियल या शील्डिंग, और इवन वी कैन डिजाइन अ डिटेक्टर. अगर हम किसी रेडिएशन को एमिट हो रहा है और वी वांट टू डिटेक्ट दैट, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंटरैक्शन ऑफ दैट रेडिएशन विद द मैटर. जब तक वो हमें नहीं पता होगा, हम कोई डिटेक्टर भी डिजाइन नहीं कर सकते. कि डिटेक्टर को डिजाइन अगर करना है, आपने डिटेक्टर फॉर एग्जांपल आपने डिजाइन कर लिया, और अगर आपने बोला कि मेरा डिटेक्टर है ये तो गामा रे को डिटेक्ट कर लेगा, और आपने बस ये इमेजिन किया कि गामा तो एक लाइट है, तो शायद मेरे को लाइट की तरह कुछ बनाना पड़ेगा तो लाइट को डिटेक्ट कर लेगा, बस इतना आपने इमेजिन किया. बट इट्स स्ट्रेंथ इज वेरी हाई, सो इट कैन पेनिट्रेट योर डिटेक्टर. आपके डिटेक्टर को क्रॉस कर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गामा आपसे के डिटेक्टर से पास हुआ नहीं पास. तो यू हैव टू means designing of the detector depends upon the interaction of radiation with the matter. तो डिटेक्टर का यूनिट इसलिए बाद में आएगा, जब हम पहले इंटरेक्शन पढ़ लेंगे फिर हम उसको डिटेक्टर में जाएंगे कि डिटेक्टर फिर उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है जिस पे आपका इंटरेक्शन फॉलो हो रहा है. तो फर्स्ट वी विल डू द इंटरेक्शन ऑफ लाइट पार्टिकल्स. लाइट पार्टिकल्स मींस दे आर light but not light particle, heavy particles with less energy. So they are alpha or you can say beta. बीटा भी नहीं, बीटा भी थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है. बीटा हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन. तो बीटा के लिए भी थोड़ा सा एक बेसिक जो प्रिंसिपल है वो तो सेम है, क्योंकि दे बोथ आर चार्ज पार्टिकल. अल्फा भी आपका चार्ज पार्टिकल है, बीटा भी आपका चार्ज पार्टिकल है. तो दोनों ही कूलम इंटरेक्शन तो करेंगे ही करेंगे. देयर इज अ डेफिनेट कूलम इंटरेक्शन विल बी देयर, बट बीटा इज वेरी लाइट पार्टिकल, so it will have a different way of interacting also. But we will talk about the first kind of particle, that is alpha or
प्रोटॉन और एनी चार्ज पार्टिकल, जैसे अल्फा हो गया, प्रोटॉन हो गया, लिथियम हो गया, लिथियम को आपने आयनाइज कर दिया, बोरॉन को आयनाइज कर दिया, तो इवन लाइटर एलिमेंट्स को भी आप आयनाइज कर सकते हो, एंड दैट कैन बिकम अ बीम. आप उसे एक्सेलरेट करो एंड दैट विल बिकम अ बीम. ओके, सो first we will discuss the interaction of these particles. These are having charge, means they are normally positive charge, and their energy range is roughly of tens of mega electron volt. इस एनर्जी के ऑर्डर का होता है, ज्यादा से ज्यादा आपका रेंज आपका 10 से 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जा सकता है. दैट्स ऑल, नॉट मोर देन दैट. So this is the energy range, and they have a positive charge, and these are the particles. So what will happen? So the interaction have different steps. The first step that the particle will follow, the first thing that particle will do, the heavy charge particle makes thousands of events before the particle lose all its energy. तो पहले तो क्या करेगा, अब इमेजिन करो कि आपको मैंने चार्ज दे दिया है और आप सी ऑफ एटम्स के बीच में एंटर कर रहे हो. जस्ट इमेजिन, आई हैव नॉट द एनिमेशन टुडे, एनिमेशन बनाने का टाइम नहीं मिला, बट इफ यू चार्ज पार्टिकल एंड यू आर एंटरिंग इनटू अ सी ऑफ एटम्स, क्योंकि आपका जो मैटर है वो एटम से ऑक्यूपाइड है पूरा, तो दीज आर एटम्स एंड यू आर एंटरिंग इनटू दैट. ठीक है, आज हम थोड़ा सा वैसे देख लेते हैं, एनिमेशन के फॉर्म में नहीं देखते हैं. And you are entering and going with a very high velocity. आपके पास velocity बहुत high है, and you are a positive charge, and these atoms have two things. हर एक atom के center में there is a positive charge, और atom के boundary पे या atom का जो पूरा maximum area है, means whole of the atom, that is negatively charged. This is, we are 100% sure कि भी atom का structure यही है, बीच में positive है और cloud of negative charge there is being covering these positive center of the atom. तो पूरा का पूरा negative है. So what will happen? Obviously there will be a Coulomb interaction. जब ये particle move कर रहा है throughout the medium, then it will have Coulomb interaction. It can have with the positive charge also, or it can have with the negative charges also. But positive charge पे interaction तो होगा, और लेट अस इमेजिन कि जो एटम्स हैं वो हेवी एटम्स हैं, दैट इज लेड काइंड ऑफ एटम है, तो दिस इज नॉट एबल टू मूव दिस न्यूक्लियाई. अगर वो इंटरेक्शन भी कर रहा है तो जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है दैट डजंट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ दिस पॉजिटिव न्यूक्लियाई बिकॉज दे आर वेरी हेवी. तो अपने साइड को छोड़ करके, बिकॉज आपका जो मटेरियल है वो किसी न किसी सॉलिड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है. गैसेस फॉर्म में हो तो इट विल हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन, बट इफ इट इज इन अ सॉलिड फॉर्म देन दे डोंट लीव देयर लैटिस पॉइंट. तो सारे न्यूक्लियस अपने लैटिस पॉइंट पे स्टिक हैं, so they don't move. But one thing which is free to move, those are electrons. Any these positive charge interact with this also and with negative also, but its force of interaction will cause the removal of, or it will cause the interaction, it will cause the whatever the electron in this atom that can be removed. There is a possibility that in सारे electrons जो भी electrons इसके atom के अंदर, तो it can remove that. There is a possibility. मतलब ये हम ऐसा नहीं करेंगे 100% है, but there is a possibility. So when it passes through this whatever the track it is taking within the matter, it try to remove at least one electron from the atom. तो atom को क्या कर रहा है? Ionize कर रहा है. So whenever the charged particle, which is a heavy charged particle, moves within any material, and this is heavy particle, so heavy particle will try to make its path. हमेशा क्या करेगा? heavy particle ना अपने path से deviate नहीं करेगा, अपने path पे ही follow करेगा. It will try to make its position within the material. तो वो straight line में ही follow करेगा. But during this motion, it will try to pull these electrons from the atom, which is very easy to move, which is very easy to remove actually. Not move, हम तो अपने point से move कर रहे हैं, but actually they are being removed from the atom. So that is, atoms are getting ionized. Means if you look into the microscope, if you passed alpha particle from any material and look into the microscope, you will find holes, and those holes, around that holes, you have a cylindrical holes, around that hole all the atoms are ionized.
atom has been, they have their electrons has been removed, at least one electron has been removed. Some किसी किसी में दो भी हो सकते हैं, तो at least one electron has been removed from the atom which is very close to the trajectory of this positive particle. ठीक है, and it has a kinetic energy, and that kinetic energy has been converted into the energy required for the ionization of these atoms. तो इसके पास मान लेते हैं हमारे पास x एनर्जी हमारे पास है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आयोनाइजेशन के लिए हमें I मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होगा. It means we can easily calculate how many atoms will get ionized when this particle will become at rest. जब स्टार्टिंग में उसके पास वेलोसिटी v नॉट था, अब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है. तो एक बार जब वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इट विल लूज ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी to this small I value, several I value for different atom. We can easily calculate this number कि कितने एटम आयोनाइज हो जाएंगे अगर मेरे को आयोनाइजेशन का वैल्यू पता है अपने पर्टिकुलर मटेरियल का, जो टारगेट मैंने यूज किया, जो आपका मैटर आपने जो भी यूज किया वो, और आपका इनकमिंग रेडिएशन का एनर्जी पता है, तो यू कैन इजीली रफली यू कैन कैलकुलेट that this much number of atoms will get ionized before this goes to a rest. ठीक है, so this is how the energy is converted, means kinetic energy is converted into the ionization energy of these atoms. और धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी लूज करता जाता है, because this is a Coulomb interaction. Electron will try to pull the positive charge and it will try to stop that. तो एक बार ऐसा दिखेगा कि वो बिल्कुल स्टॉप हो गया है. Okay, second one, the step that will be followed. Heavy charge particle is different, is deflected at negligible angle, means it is moving in roughly in a straight line. अगर अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, और कोई भी हेवी पार्टिकल है, heavy particle means not very heavy, but it is at least heavy with respect to a proton. Proton से एक ज्यादा है, दो ज्यादा है, या तीन mass number ज्यादा है, AMU. So those will follow a straight line into any matter. So they will not much deflect from their path. Electron के केस में different होता है, they deflect. तो वहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे क्या difference है. Third case, the Coulomb force has a infinite range. Coulomb force का range हमेशा infinite होता है because that is electrostatic force, and the particle interacts simultaneously with the electrons and lose its energy gradually by a continuously along the path, जो मैंने भी explain किया. Means during the motion it is doing a Coulomb interaction with these atoms, these electrons, and it goes on losing the energy to these means to ionize these electrons. इसको ionize करने के लिए it is goes on losing its energy and hardly it left with any energy, so this particle become a rest in the matter. तो वो अल्फा पार्टिकल आपका कहीं जाके एम्बेड हो जाएगा, वहां पे आपका वहां पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा. ठीक है. Another interaction by which the energy of the particle is lost, that is the energy needed to ionization. ये मैंने ये भी एक्सप्लेन आपको करी थी, मेरे ख्याल से यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया. that is that all the things I have written there. ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसका थोड़ा सा, इसमें इसी प्रिंसिपल को लेकर के वी हैव डेरिवेशन. तो इस चैप्टर में सिर्फ एक ही डेरिवेशन है. आई होप अगर एग्जाम में गामा पे भी डेरिवेशन देते हैं तो गामा फिर आपका डेरिवेशन में भी आपने कर लिया हो. कॉम्पटन इफेक्ट आपने कर लिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने कर लिया है. ये दोनों इफेक्ट आपने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, कॉम्पटन एंड फोटो इलेक्ट्रिक, तो आपने पढ़ लिया ना, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है ना. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ोगे इसमें भी. वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट पता नहीं क्यों जो माइंडसेट है, बिकॉज न्यूक्लियर फिजिक्स इज इंट्रोड्यूस्ड 3 ईयर बैक ओनली, 3 या 4 ईयर, जब से CBCS आया है. उससे पहले ये मास्टर्स में पढ़ाया जाता था. तो ग्रेजुएशन में हम सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट जैसी चीजें पढ़ते थे. तो even gamma radiation when enters into any matter that follow those things, but मुझे लगता है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में उनके डेरिवेशन का कोई यूज होना नहीं चाहिए, बट एग्जाम में हमेशा आ जाता है डिराइव द कॉम्पटन इफेक्ट. व्हाई दे गिव, व्हाट इज द लॉजिक टू गिव, आई डोंट नो. क्योंकि वहाँ न्यूक्लियर को लेकर के थोड़ा सा क्वेश्चन होना चाहिए, और अदर न्यूक्लियर को लेकर के नहीं, मॉडर्न फिजिक्स को लेकर के क्वेश्चन होता है. तो मुझे नहीं पता क्या आप फॉलो करते हैं बुक,
इवन बुक भी जो फॉलो करते हैं बहुत सारे, आप कॉलेजेस में बच्चों से पूछोगे ना कि आप क्या फॉलो कर रहे हो, कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए, अगर दूसरे कॉलेजेस में पढ़ा रहे होंगे मैक्सिमम में ये होता है, ये टॉपिक आपको 70-80% कॉलेजेस में मिल जाएगा, कि क्योंकि एक तो प्रैक्टिकल नहीं होता है, और बहुत सारे टीचर्स हैं जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाते हैं वो अपने आप को न्यूक्लियर फिजिक्स में कन्वर्ट कर चुके हैं आज के टाइम में. द बुक दे फॉलो इज मॉडर्न फिजिक्स, बट दैट शुड नॉट बी द प्रैक्टिस. मैं एक दो बार मेरे को इंटरेक्शन का मौका मिला जब हम किसी पर्पस के लिए मिलते हैं एट द एंड ऑफ सेमेस्टर. सो देयर दे आर सेइंग कि वी आर फॉलोइंग दिस बुक, यू डोंट फॉलो. मतलब मैं क्रेन फॉलो करता हूँ. क्रेन के पहले पेज पे आप देख लो क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्टरी न्यूक्लियर फिजिक्स. आप पढ़ा क्या रहे हो? न्यूक्लियर फिजिक्स. आप अगर बाइजर फॉलो करोगे, बाइजर फॉलो कर सकते हैं फॉर फ्यू टॉपिक्स, वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है क्लैरिटी आपको ज्यादा मिल जाए. तो some topics you can follow from Beiser or Murugation. Murugation is one more book. You may have heard Murugation नाम आपने मे भी सुना हो. तो Murugation भी एक book है which is actually the problem. You have so many problems on the modern physics. So you can purchase that book also. But वो modern physics के लिए, not for the nuclear physics. But people used to teach from there only. तो कॉम्पटन इफेक्ट एक ऐसा डेरिवेशन है जो आ सकता है एग्जाम में, और 10 नंबर का आता ही है, कई बार आया, हर ऑल्टरनेट एग्जाम में आया हुआ है. और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतना डिटेल में नहीं आता है, बट दैट वी विल लर्न इन अ वेरी ब्रीफली इन द दिस पर्टिकुलर यूनिट. तो मैं उसको डेरिवेशन में आपको नोट्स में दे दूंगा, बट उसको मैं क्लास में नहीं करवाऊंगा, ठीक है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दोज टू थिंग्स. तो अभी हम जो करेंगे वो हम ये वाला डेरिवेशन आपका और कहीं नहीं पढ़ते हो, यहीं पे पढ़ते हो न्यूक्लियर फिजिक्स में. सो दिस इज द डेरिवेशन विच वी आर गोइंग टू डू. दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, or you can say Bethe Bloch formula for the stopping potential. तो we have to do the derivation for this one. तो एक बार जरा पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम के बाद डायग्राम जो हम फोर्स डायग्राम बनाएंगे उस डायग्राम की बात कर रहा हूँ. ये डायग्राम तो है ही जो हमारे पास बेसिकली इंटरेक्शन डायग्राम है, which you should able to explain when you are writing the assumptions, or when you are writing how what kind of interaction is happening between a charged particle, fast moving charged particle, when it is entering into a matter. So what are the things which is happening? तो अभी जो मैंने explain किया है वो point wise में आप लिख सकते हो, but जो derivation है that is normally used to come around 8 marks कि stopping potential को derive करो. So let us go to the derivation, and derivation having this same principle which you have discussed here. That is, I will make the diagram first ताकि वहां से ज्यादा clear हो. Let us take red for the alpha particle only. So this is the alpha particle and it is moving straight into the matter. हम straight ही दिखाएंगे उसे, and it is having certain velocity v initially. And let us take 2 points of consideration, m and take 1 point r, and center of that is 0. तो हमने 2 पॉइंट बिल्कुल सिमेट्रिक ऑर्डर में ले लिया है, which is this MO and OR. ठीक है, and we are taking at a distance, some distance, and again we will call this distance as the electron is here. Let me make it with blue. So the electron is here. This is electron, and that is an atom. तो किसी atom का वो part है वो electron, and that is here. So this particle is interacting. This is a positive charge. This is a negative charge. This is a positive charge particle. इसको positive ZE लिख देते हैं. And this is E, which is negative charge. Okay. So when the particle is at this point at M, having certain velocity, whatever the velocity you can consider, it has a force of interaction. In the same sense, where the particle is here, it has a force of interaction. Means this particle is attracting this negative charge. It is trying to pull from its atom. Atom आपका यहाँ पे, तो atom से इस electron को pull कर रहा है along the track, क्योंकि track में motion है ना, track के along it is trying to pull that.
along this particular thing, and at any random distance which we have took r, when it is at this point then also it is pulling. तो हमारे पास एक जनरल कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे f की वैल्यू है when the particle is at any point. Let us say from this 0 it is at distance x. At distance x when this particle is from this particular point, means जो impact parameter वाला ये इसको हम impact parameter यहाँ पे भी कहेंगे, which is the closest distance between this electron and the track of the positive charge. तो ये track है, इस track और इस electron के बीच में जो shortest distance होगा, because this is also a distance, this is also a distance. So anywhere when the particle is there, electron is here and the particle can be anywhere. So there is a distance between these two, but what we will call it as impact parameter. So that impact parameter will be the smallest distance between these two, and that will be this at the perpendicular. एक possibility जो track का आपका path का line है, जो आपके alpha particle का और जो आपका perpendicular line है with respect to this electron. So that will be your perpendicular जो होगा ना, that will be, we will call it as the smallest distance between these two, and that is called as a impact parameter, which is B. उसको हम यहाँ पे भी denote करेंगे, B से denote करेंगे. At any general point, let us assume that at R, the force will be ZE square, because ZE into E, so that is ZE square, 4 pi epsilon naught, and let this distance is R, so that is R square. ठीक है? Is it clear? तो एक general point पे हमारा force of attraction, यानी this electron is being pulled by this positive alpha particle or positive charge particle. Is it clear? Yes, sir. ठीक है, ये diagram clear है, and this angle we will call it as theta, and this angle we will call it as phi. वैसे तो बहुत फर्क नहीं, 180 minus theta is phi, so but still we will call it as phi. So what we can okay, this is a diagram, and after that we will first this is a point Q also. मैंने mark कर रखा है, तो एक बार point Q भी mark कर दिया मैंने, O mark कर दिया, M mark कर दिया, R mark कर दिया, velocity आपको इसकी दे दी मैंने V, और इनके बीच में interaction भी लिख दिया, and now we write the assumptions. First assumption before doing this derivation, because we have to do the assumption, there will be always a background other process will go on, but we will write in such a way that what is dominating. So the first assumption is that the velocity of electron in the orbit, means velocity of electron in the orbit is much smaller than velocity of ion. यानी इस velocity, यानी velocity of ion is very large with respect to the velocity of electron within the atom. यानी orbital velocity है ना electron की, उससे बहुत ज्यादा है आपका ion का velocity, at least 100 times. मैंने हमेशा बोला है infinity और very large कब compare होगा, when it is at least 100 times or more than 50 times. Okay, is it okay? So what we can write, the ion's energy divided by mass is much greater than electron energy divided by its mass. अगर आयन का मास यानी जो आपका Ze है उसका मास, इसको अगर रेशियो निकालते हो तो this number is large, because this mass is large and incomparable, this is small, so this is also small, so you will get a comparison की ये value आपकी at least follow होनी चाहिए. अगर ये follow नहीं होगा तो you will have different interaction. Second assumption, that collision between the electron and the positive charge, which is like your projectile, which is entering into the matter, can be treated classically. तो पहले हम classically चलेंगे. Quantum mechanical is tougher to deal with, and even you need to put the relativistic. Because why relativistic? Because the velocity is very high, they are comparable to their rest mass sometime. तो relativistic भी correction करना पड़ता है, but we very well know, अगर क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट हो गया आपका, आपने मतलब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना शुरू कर दिया ना, या नहीं? क्वांटम मैकेनिक्स चल रहा है ना आपके सिलेबस में, या नहीं चल रहा? यस, नो, नो, यस, कुछ तो.
डू यू हैव क्वांटम मैकेनिक्स इन योर सिलेबस करंटली? कुछ पूछूंगा नहीं उसमें से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बट है क्वांटम मैकेनिक्स ना, तो मॉडर्न फिजिक्स ही पढ़ा है अभी तक। हाँ, नहीं क्लियर नहीं, पता चला आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी। मेरे ख्याल से एक टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स आपके सिलेबस है एक, शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है कि 5th सेमेस्टर में है, और यस वो सर main- है। है ना, मेन पेपर होगा वो, मतलब ऐसा डीएससी वाला नहीं है, दैट विल डीएससी इज डिसिप्लिन स्पेसिफिक, that is a main paper, means everyone has to read even if you, okay, so that in mechanics you have must have, when you have started with the equation of quantum mechanics, that is Schrodinger equation, तो एक लाइन आपने मे बी लिखी हो या मे बी याद किया हो, that quantum mechanics is not compatible with relativity. Quantum mechanics is not at all compatible with relativity, and for relativity we need another quantum mechanics which is called relativistic quantum mechanics. तो अब जो अभी जो पढ़ रहे होगे ना आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें जो आपका श्रोडिंगर इक्वेशन है उसमें एक मास का टर्म है, उस मास के टर्म में एक कंस्ट्रेन है दैट मास शुड बी कांस्टेंट, मास शुड नॉट वेरी व्हेन यू आर डूइंग दिस, व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। अब श्रोडिंगर इक्वेशन है, दैट इज नथिंग बट द डिफरेंशियल इक्वेशन, बट उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप मास को कांस्टेंट ट्रीट करते हो, उसको कांस्टेंट लेके चलना पड़ता है, दैट इज अ कंस्ट्रेन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इट इज गुड बट वेरिएबल मास के लिए पॉसिबल नहीं। अगर आपके वेलोसिटी से मास वेरी हो रहा है, then you cannot use that equation, then you need to have another equation which you may learn in maybe next semester or maybe in masters, अभी नहीं पढ़ोगे, that is derived with the Dirac and that is relativistic quantum mechanics। तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो मास के साथ वेरिएबिलिटी का अलाउ नहीं करता है, यानी मास शुड नॉट वेरी। सो दिस इज आल्सो द रिस्ट्रिक्शन वी हैव टू पुट हियर, that we will treat this thing because obviously these are in relativistic velocities, so masses change हो सकते हैं, but we will restrict ourselves to classical mechanics only, मतलब classically हम इसको treat करेंगे, means ion का momentum यानी this ion, and if you multiply with the impact parameter that must be greater than h bar, ये वाला ऑर्डर हम इस p और b का ऑर्डर हम इसको ग्रेटर देन h बार रखेंगे, तो वी कैन ट्रीट दिस एज अ क्लासिकल पिक्चर, हम इसको क्वांटम मैकेनिकल या रिलेटिविस्टिक में नहीं जा रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी, थर्ड पॉइंट विच इज assumption, that is binding energy of electron in the orbit is so small compared to the energy of incident ion। यहाँ पे तुमने वेलोसिटी ऑर्बिटल मोशन के कारण उसके पास जो एनर्जी थी, दैट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी यू कैन से फॉर द इलेक्ट्रॉन, दैट इज लेस देन द आयन व्हिच इज दिस वन, वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में लो था, बट वी कैन विल आल्सो से दैट बाइंडिंग एनर्जी इज आल्सो स्मॉल कंपेयर टू वी। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो स्मॉल, क्योंकि अगर बाइंडिंग एनर्जी कंपेरेबल होगा तो एक ही एटम या दो एटम को ही आयनाइज कर पाएगा आपका चार्ज पार्टिकल, ज्यादा एटम को नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इट विल जस्ट एंटर इनटू द मीडियम, इट विल स्टॉप, because once it passes all this, it's transferred all this energy to the ionization of any particular electron whose binding energy is comparable to that value, then it will stop। Fourth one, the energy lost by the ion in each collision। each collision हम बार बार कह रहे हैं, बट ये डायरेक्ट यहाँ कोलाइड नहीं हो रहे हैं, they don't collide each other, यहाँ पे कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, just doing the interaction। तो collision का meaning यहाँ पे interaction से। So the energy lost by the ion in each collision is so small compared to the incident energy of the ion। इसका meaning क्या है? इसका meaning ये है कि for example, मतलब वैसे इसी का implication है, अगर ध्यान से देखोगे तो इसी का implication और कुछ नहीं है। जब एक बार वो एनर्जी मींस व्हेन इट डू द आयोनाइजेशन ऑफ वन एटम, इट लूज हाउ मच एनर्जी, पी एनर्जी। भाई उसको अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी यानी जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी के इक्विवेलेंट एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा।
और थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा भी करेगा if electron is having certain kinetic energy after the removal. So that value is very small. And once we have said this number is very small, it means for each collision, means one interaction, तो कितना ट्रांसफर कर रहा है? That transfer is very small. अगर bi by v करते हो, यानी एक ट्रांसफर यानी एक इंटरेक्शन में आपका एनर्जी इतना लॉस हुआ, this is the loss, and you can say delta E kind of thing. So delta E is the loss, and with respect to the ion energy, so that number is small. तो होगा क्या? अब इमेजिन करते हैं, इसी को हम इसी का दूसरा सेंस लेते हैं. If energy loss is very small for each collision or each interaction, then the velocity for each collision or each interaction before the collision, velocity before the collision and after the collision, that will remain same. इसका मीनिंग क्या हुआ? एक collision पे जो एनर्जी लॉस हो रहा है, that is very small, comparable to zero with respect to your ion energy. It means it hardly lose its energy. नहीं, अगर उसके पास 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आ रहा है वो, और वन डेल्टा ई की वैल्यू जो लॉस है, विच इज एक्चुअली बी आई, एंड दैट इज लेट अस से 40 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द दिस इज द एनर्जी बिफोर द कोलिजन. इसको मैं इनिशियल कर देता हूँ, आई एन इनिशियल कर देता हूँ. फॉर वन कोलिजन वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट फॉर ऑल कोलिजन्स, एक कोलिजन की बात कर रहा हूँ. एंड दिस इज द ई फाइनल. ई इसको हम एफ लिख सकते हैं, फाइनल. Will these numbers will be comparable? Will these two number will be comparable to each other? Yes or no? For one interaction, the E initial will be comparable to E final also. कोई ये बड़ा नंबर थोड़ी ना, आप माइनस कर दोगे तो कोई बहुत बड़ा नंबर थोड़ी ना मिलने वाला है. वो भी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा, 9999 समथिंग 60 का नंबर आएगा. तो अगर मेरा इनिशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और फाइनल मोर लेस सेम है for one interaction, it means velocity will also be remain same, means velocity before and after the collision, and we are concerned with one collision, that will be same. इससे एग्री हो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सारा डेरिवेशन इसी पॉइंट पे फोकस्ड है. तो लास्ट वाला पॉइंट है ना, इसी पॉइंट पे फोकस्ड है कि किसी भी कोलिजन के लिए वेलोसिटी उस कोलिजन से पहले और उस कोलिजन के बाद दे आर सेम वैल्यू, because you lose very small energy to the electron. If it is clear, then we can start the derivation. Okay, so thumbs up आ गया है. तो thumbs up से अच्छा बोल भी सकते हो. घंटे भर से बोल के मेरा मुंह दर्द हो गया. I have a pain in the jaws. Okay, so the but इसका मीनिंग ये नहीं है कि पार्टिकल एनर्जी लूज नहीं करेगा. इट विल लूज इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, अल्टीमेटली इट विल स्टॉप टू रेस्ट. इट हैज टू स्टॉप. तो ये नंबर एक कोलिजन के लिए तो बहुत लो है, लेकिन ऐसे अगर आपके बिलियंस ऑफ कोलिजन हो जाते हैं, देन your initial energy, if you compare with the last final energy, that will be different. It means the particle has to stop. But for one collision we can assume कि एक, अगर इस डायग्राम को सिर्फ देख रहे हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन हो रहा है, तो वेलोसिटी इज सेम थ्रू आउट द मोशन. ये पूरे ट्रेजेक्टरी में उसके इस इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी सेम है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन को अपने डायग्राम में बनाया, तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए द वेलोसिटी इज सेम.
but it do the simultaneously, it do the interaction with several electrons, so it will stop at the end. तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी जैसे आपको लग रहे हो कि भी वो कोलिजन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है, फिर भी एनर्जी लूज कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है बट स्मॉल अमाउंट में कर रहा है, और ऐसा काम वो साइमल्टेनियसली सेवरल इलेक्ट्रॉन के साथ कर रहा है. So that is why it has to stop. But one interaction के लिए it will be same. Okay, so we have drawn the force in a general direction, that is R, and there is an impact parameter, that is the distance between the electron, that is shorter distance between the electron and the trajectory of the ion, or you can say particle, which is positive charge particle, heavy particle, and these are the different points. So the force which is effective to remove this electron. अब इसी ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, इस फोर्थ पॉइंट का एक इम्प्लीकेशन और आएगा. अब जरा मैं इसको पहले इस फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. वन पार्ट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट इज एफ एक्स, एंड वन पार्ट इज अलोंग दिस डायरेक्शन विच इज एफ वाई. मैं इस फोर्स को ब्रेक कर सकता हूँ ना दो पार्ट में. अगर मेरा डिस्टेंस ये भी होता तब भी मैं फोर्स को दो पार्ट में ब्रेक कर सकता था. अगर मेरा डिस्टेंस में इसको इमेजिन कर लो, देन ऑल्सो आई कैन ब्रेक इनटू टू पार्ट्स एंड सो ऑन. तो ट्रेजेक्टरी में कहीं पे भी हूँ, तो अगर मैं फोर्स को पॉइंट कर रहा हूँ तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन का फोर्स है, बट ऑल विल हैव टू कंपोनेंट. वन इज अलोंग दिस लाइन विच इज इम्पैक्ट पैरामीटर के अलोंग होगा, एंड वन इज अलोंग एक्स, एंड एक्स में भी आपके इस डायरेक्शन में भी होगा, और जब पार्टिकल आपका एम पे था, यहाँ पे था, तो इस डायरेक्शन में भी है. यानी आपका फोर्स एफ एक्स पॉजिटिव भी होगा और माइनस भी होगा. ठीक है. तो जब पार्टिकल एम पे है तो आपका ये कंपोनेंट है, जब पार्टिकल आर पे है तो आपका कंपोनेंट ये है. ठीक है. ओके, सो लेट मी गो डाउन. अब हम डायग्राम से थोड़ा सा साइड हो जाते हैं. तो एफ अलोंग एक्स, what about this? What we can say the net value of f along x, उसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं कि वो बड़ा नंबर होगा, छोटा नंबर होगा, या कैसा होगा? एक्स कंपोनेंट पे देखो ध्यान से, ऊपर फिर से डायग्राम ही दिखा देता हूँ. वी हैव, यहाँ पे बना लेते हैं. दिस इज योर v and this is your r, and this is the force direction, general force, and that has been resolved into two parts. This is fx and this is fy. And when the particle is here and then the particle is here, आपके r पे था, एक बार m पे था, ये आपका 0 है. तो यहाँ पे भी जब पार्टिकल था तो you have force in this direction, and that can be resolved into fx and fy. क्या कह सकते हैं fx के बारे में? डायग्राम देख के कुछ पता चल रहा है कि what you can say about fx? fy अगर ध्यान से देखोगे तो it is always downward, it is never upward. तो fy will never be 0. fy तो सब एड अप ही होंगे. चाहे पार्टिकल यहाँ पे तो fy इंटरनली यहाँ पे आ रहा है, जब पार्टिकल यहाँ पे तब भी fy यहाँ पे होगा उस कंपोनेंट का, पार्टिकल यहाँ पे तो fy यहाँ होगा, यहाँ हो तो होगा ही fy यहाँ पे तब भी fy इसी डायरेक्शन में होगा. तो fy तो इफेक्टिव फोर्स मुझे नजर आ रहा है. व्हाट अबाउट fx? जब पार्टिकल यहाँ पे है, चार्ज पार्टिकल, तो fx ये डायरेक्शन है. जब पार्टिकल r पे है तो ये डायरेक्शन. तो व्हाट वी कैन से अबाउट fx? Can we write any statement about fx? An important point is the velocity of this velocity is very large compared to the velocity of these electron in the atom. अगर इलेक्ट्रॉन ये रहा, इलेक्ट्रॉन अपने एटम में मूव भी कर रहा है, तो दिस इज वेरी फास्ट, जूम पास. यहाँ उसको इलेक्ट्रॉन जब तक उसको देखते हैं कि अरे यहाँ पे, तब तक वो यहाँ पहुंच चुका होता है. तो इलेक्ट्रॉन को यहीं पे रहना पड़ेगा फॉर टाइम बीइंग, जब तक कि यहाँ से यहाँ ना पहुंच जाए.
इतना हिंट दे दिया. Fx can be 0. Yes. Momentarily what happens, हमें डायग्राम देख के लग रहा है कि जब पार्टिकल m पे है तो fx is there, so it will try to pull the electron in this way. बट जब तक ये फोर्स अपना एक रिस्पॉन्स डाल पाता है, the particle reaches to here and it again apply the means what appears for the electron that these two forces, although they have some time lag, but they appear simultaneously for the electron because the electron velocity is not, अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कंपेरेबल होती इस आयन की वेलोसिटी से तो दिस फोर्स कुड नॉट बी कैंसल्ड, दिस इज नॉट पॉसिबल. एक बार ये यहाँ पे लग रहा है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया तो इट विल एक्ट इन दिस वे, सो दे कैन नॉट बी इन द सेम डायरेक्शन, so there could be a torque. So that is very important, that why we are saying कि velocity, the orbital velocity है that should be small compared to this one. We need to say that because we have to assume that these two forces appear simultaneously at a point in this electron trajectory. तो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है दोनों फोर्स उस पे साइमल्टेनियसली अपीयर हो जाएंगे, बट ऑल्दो दे हैव सर्टेन टाइम लैग, but electron will feel that both is appearing at the same time because the velocity of the particle is very high. So this is hardly any effect. The net value of fx is 0. तो मैं statement आपको लिख के दे दूंगा कि what you have to write. We have to only write that the particle when it is at m it produces this force, and when the particle is at r it produces this force, and because the particle velocity is very high, so these two forces appear simultaneously for the electron and net value of fx is 0. So the only value which is existing is fy. आपके पास क्या रह गया, सिर्फ fy रह गया. अब fy भी आपका कौन सा है, आपके f तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में और r की वैल्यू भी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, बट पार्टिकल जब पोजीशन चेंज कर रहा है तो नेट इफेक्ट fy है. अब मैंने ये एंगल आपको कितना लिखा था, ये थीटा मैंने लिखा था और ये शायद मैंने फाई लिखा था, एंड दिस वैल्यू वाज x. x इज अ वेरिएबल, x आपका वेरी करेगा अलग अलग पॉइंट पे और r भी आपका वेरी करेगा, b आपका कांस्टेंट है तो x और r के अकॉर्डिंग फाई भी आपका वेरी करेगा. तो fy की वैल्यू वी कैन राइट एज, और f तो हमें पता है कि fr क्या है, fr साइन ऑफ थीटा होगा या कॉस ऑफ थीटा होगा, थीटा के टर्म्स में अगर लिखें तो दिस थीटा. the force along this one यानी cos of phi is opposite side by hypotenuse, so fy is cos of fr मतलब cos of phi fr, so we can write fr sin of theta. Can we write? Can we write? या नहीं? 4 pi epsilon naught r square and sin of theta. ठीक है, क्योंकि cos phi आ रहा है ना, तो cos phi को sin theta के टर्म्स में pi से आपको रिप्लेस करना है, तो यू कैन राइट इन sin of this. Okay. And the फर्स्ट लाइन में fr sin phi नहीं होगा? नहीं मैंने phi लिखा ना, ओ सॉरी opposite side है ना, yes, opposite side by hypotenuse that is sin, and phi is pi minus theta, so yes that will be sin theta only, yes. And this is in second quadrant, तो second quadrant और first quadrant में sin हमारा positive होता है, तो that is why we have a positive sign, yes. This is sin phi. मैंने बोला भी opposite side by hypotenuse था लेकिन लिखा मैंने cos है, yes it is opposite side by hypotenuse. So this is the value of fy, which is the effective value and which is along the y direction, which is this one, and that is the force which is going to remove the electron from the atom. So atom से जो electron remove हो रहे हैं ना, means atom is getting ionized. This is the force which is responsible for that one. Okay, and we can write one more thing, that is this x is continuously changing because r is also changing, so we can write that dx is equal to v dt. We can easily write that how much dx is there, that will be decided by the velocity and the time of interaction or delta t.
सो कुछ भी नहीं है, मीन्स इसको v इक्वल टू dx/dt मैंने लिख दिया। यानी वेलोसिटी कितनी है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, विद इन हाउ मच टाइम, दैट आई हैव रिटन। सो दिस वी कैन इजीली रिप्लेस। तो एक बार जरा हम और आगे देखते हैं क्या वैल्यू चेंज कर सकते हैं। नाउ this is the force only, and how much momentum which is imparted to the electron, how much momentum which is imparted to this electron when it is being subjected to this force. So that will be equal to integration. First we will write in terms of d, because momentum is nothing but fy dt impulse, जो हमने कल भी हमने उस दिन रदरफोर्ड स्कैटरिंग में भी ये फॉर्मूला यूज किया था, और यहाँ पे भी हम यूज कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली फ्रॉम वेयर द इंटरेक्शन हैज स्टार्टेड विद टाइम t0 एंड दिस इंटरेक्शन हैज एंडेड एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी। यानी जब पार्टिकल बहुत ही दूर है इलेक्ट्रॉन से, और जब पार्टिकल आगे भी बहुत दूर चला गया इलेक्ट्रॉन से, तो वो टाइम हमारा 0 और इंफिनिटी हम अज्यूम कर रहे हैं। तो वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ दिस वन, एफ आई हमें पता है कि क्या है, z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r square sin theta and dt, and we can replace this dt by this particular formula. So let us write that one. और अब जरा हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। लिमिट भी मुझे बताओ कि लिमिट में मैं क्या लिखूं। अगर मेरा सारा इक्वेशन मेरा किस में हो गया, साइन थीटा dt को क्या लिख सकते हैं, dx by v। तो dx के सेंस में क्या हो जाएगा, dx के सेंस में भी रहने दो, अभी dx में भी एक और लिमिट क्यों चेंज करना। लेट अस राइट dx की वैल्यू, इट विल बी माइनस, यू कैन से माइनस वेरी लार्ज वैल्यू एंड प्लस a big value. So instead of that you just keep it here t equal to 0 and t equal to infinity, ये मेंशन कर देना, otherwise confusion होगा कि dx की वैल्यू 0 to infinity तो नहीं होगी। So this I will write it here. Now we can replace this dx by theta from the diagram. We can replace this dx by theta. Look at the diagram. X means opposite side, b by x is tan of phi, है ना, b by x is tan of phi। और tan of phi को अगर साइन मतलब phi tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, मेरे ख्याल से कि क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपका साइन तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, tan आपका पॉजिटिव नेगेटिव में चलता है। दैट मस्ट बी tan पाई माइनस थीटा, and this will be how much, you have to write tan theta with minus sign. I hope so. This is the trigonometry, and you can easily write x is b divided by tan of theta minus sign, and you find dx, how much dx is। एक बार जरा dx की वैल्यू निकालो, कितना आएगा। b constant है, b is not variable, b is constant, so how much this value is। माइनस ठीक है, माइनस एक बार चेक कर लेना, माइनस ठीक है, मैंने मतलब tan को अगर tan फाई को हम tan पाई माइनस थीटा में चेंज करें तो जस्ट चेक दैट। यस सर ठीक है। एक बार जरा इसको डेरिवेट करो, मतलब 1/tan को डेरिवेट करो, 1/tan को आप कर सकते हो cos बाय, मतलब cot है, अगेन द cot इज देयर, इट मींस cosec आएगा, हमने अभी तो किया डेरिवेशन, इसे करने की क्या जरूरत है, cosec स्क्वायर आएगा, वो माइनस साइन आएगा तो माइनस विल गोज ऑफ। पिछले केस में अभी हमने किया ना, उसमें db हम जब डिराइव कर रहे थे तो वहां पे भी हमने किया है, तो दिस विल बी माइनस साइन विल गोज ऑफ b डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर, ये कॉट हो गया ना ऊपर जाके, तो कोसेक बन जाएगा, तो दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। चेक कर लो एक बार, ये सही है,
चेक कर लो बस। Then we can replace this dx by b sin square theta d theta. And we can do one more Yes, thing. sir. This is one, ठीक है, one replacement, one एक और replacement यहाँ कर सकते हो, r का भी replacement कर सकते हो। r को भी आप डायग्राम में देखोगे तो थीटा के टर्म्स में या b के टर्म्स में you can write b by r, opposite side by this one is sine of theta, so r is b by sine of theta। ठीक है, अब जरा हम यहाँ पे आ जाते हैं। जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर की जगह लिखना है बी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आर स्क्वायर को रिप्लेस किया, साइन थीटा इज ऑलरेडी देयर, साइन थीटा हमारा ऊपर ही है, यस, साइन थीटा इज हियर एंड वेलोसिटी इज आल्सो देयर, and there is third term, this is dx, that is b divided by sine square theta d theta. Now once you have d theta, now you can check what should be the limit in terms of theta. अभी तो टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? एंड ट्राई टू इमेजिन द सेम डायग्राम। यहाँ पे दिखने में आपको डायग्राम थोड़ा सा बड़ा ही आइसोसेलेस ट्रायंगल लग रहा हो कि b और x तो सेम लग रहे हैं, बट इन रियलिटी द पार्टिकल टेक्स अ मिलीमीटर ऑफ डिस्टेंस, ज्यादा नहीं लेता है, ये मिलीमीटर का डिस्टेंस है, उतने में ही स्टॉप हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर में स्टॉप हो जाता है, इट इज वेरी स्मॉल नंबर, but the nearest atom which is present to this trajectory is in angstrom, tens of angstrom. So if you draw a diagram, this impact parameter is very small compared to this length. तो अगर थीटा में देखूं तो ये अगर मैं ये वाली लाइन जो है, दिस लाइन व्हाट यू कैन डू विद दिस लाइन, अगर थीटा पार्टिकल मेरा यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में है, तो आई जस्ट पुल दिस आर पॉइंट, इसको मैं पुल करता हूँ और पुल करते करते मैं इधर लेके आता हूँ, तो थीटा विल व्हाट थीटा वैल्यू विल बिकम, इट इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज। इस डायग्राम को बस चेक कर लो, ये दो लाइन है आपके, ये रबर से बने हुए एग्जांपल के लिए, दे आर मेड अप ऑफ रबर and these 2 points are fixed, and now you are pulling this one, so what will happen to theta? Theta will approach to, when you are starting the trajectory, so theta will approach to, when an interaction started, इस पॉइंट को आप पुल करने की कोशिश करो, यानी ये थीटा ये रहा, जब आप यहाँ पे हो तो थीटा ये रहा, इस थीटा से ये थीटा डिक्रीज हो गया, जब और दूर हो और डिक्रीज हो गया, तो when you are started with the interaction your theta is roughly 0, and when you have moved very far from this electron, आप बहुत दूर चले गए, so this line is roughly a straight line, so that theta will reach to pi. So these are the limit. आपको मैं डायग्राम में बना के दिखा देता हूँ। This is a trajectory, this is a electron, when you have started from here, this is your ZE plus this is the theta, इसी को तो हम theta कह रहे हैं ना, and when you have moved away very far, so this is theta, so this is roughly pi and this is roughly 0. जब आप स्टार्टिंग में थे तो इस लाइन और इस लाइन का एंगल देख रहे हो, तो दैट इज रफली 0, जब आप बिल्कुल अवे हो गए तो इस लाइन और इस लाइन का एंगल देख रहे हो, दैट इज रफली पाई। इज इट क्लियर? Yes, sir. मतलब हमने जो t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन और स्टार्टिंग ऑफ द इंटरेक्शन एंड एंड ऑफ द इंटरेक्शन, उन दोनों पॉइंट को अगर हम प्रैक्टिकली विजुअलाइज करते हैं तो दैट विल बी 0 एंड पाई एंगल, जो वहां पे थीटा होगा एक के लिए 0 होगा, और व्हेन वी आर वेरी फार दैट विल बी पाई। यू कैन इजीली सी दैट ये कैंसिल हो गए, ये बी स्क्वायर और बी है तो ये भी कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली, अगर आप बाकी टर्म्स को पुल आउट कर लेते हो, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बी आपका आ गया नीचे और वेलोसिटी भी आपका नीचे आ गया, और यू आर लेफ्ट विथ 0 टू पाई
sin theta d theta. How much this value is? कितना है ये वैल्यू? minus cos theta. हाँ, फिर उसमें 0 to pi भी डालो ना वैल्यू. 2 minus cos theta, and जब 0 डालोगे तो it will be, sorry, जब pi डालोगे तो it will be minus, so minus and minus तो बाहर ही है, तो -1 and -1, so that will be -2, and then there is a minus sign because minus cos theta, so that will be 2. So this is roughly means how much momentum has been transferred to the electron is Z square divided by 2 pi epsilon naught P, and so this is the momentum transfer to one electron, one single interaction we are talking about. ठीक है, ठीक है, तो मोमेंटम जो नेट ट्रांसफर हो रहा है वो इतना हो रहा है. This much momentum is being transferred to the electron during one single interaction of electron with the ion. Clear? Is it clear? Thumbs up. Yes, sir. Okay. चलो, अब इसको थोड़ा सा और आगे इम्प्रूव करते हैं. आज ज्यादा नहीं, 20 मिनट्स ही बचे हैं, तो थोड़ा सा और हमें चाहिए. That is a little bit more. That how much energy is transferred. अभी तक तो हमने मोमेंटम निकाला है. Now we can find how much energy we have to transfer. Excuse me, sir. हाँ हाँ, बोलो बोलो. Sir, बोलो. please explain the first assumption. First कौन सा? So that जो E1, ये E1 derivation. upon Okay. M1 is very greater than EE. Yes, this term, if you means the velocity of electron in the orbit, the orbital velocity जो electron की होती है, that we are considering कि that is very small compared to your velocity of ion. Clear? ठीक है? Yes, sir. This is okay, and this is the energy, which is the kinetic energy. You can say the energy of ion divided by the mass of ion. तो अगर एनर्जी और मास का भी आप, क्योंकि एक्चुअली आपको अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, लेट मी जस्ट राइट द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी एंड मास. लेट मी जस्ट राइट द फॉर्मूला. वी नो दैट E is P square by 2m, और यू कैन से हाफ mv square. यही होता है ना. तो E2 डिवाइडेड बाय m इज एक्चुअली v. ठीक है, यही फॉर्मूला है. or you can say V is roughly you can say in order of this one. तो अगर velocity of ion मेरा बड़ा है तो root of this number, or you remove the root, दोनों तरफ आप root लगाओ या root को remove कर दो, then also this number will be greater. अगर ये ion की velocity ज्यादा है तो ये number भी तो आपका ज्यादा ही होगा, क्योंकि velocity आपकी ज्यादा है. velocity आपका comparable होता है E by m से. फॉर्मूला से ही क्लियर हो गया ना. if this velocity is more and you comparing the root of these two, it means root को remove कर दो. this number has to be, the ratio has to be greater than this one. Yes, sir. Got नहीं, it. ठीक है, मतलब ये मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा था, मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया, because assumptions में we don't write all this formula, we just write the velocity is large, so E by m will be also large, because E by m is nothing but it is giving the idea of velocity only. बस उसमें एक रूट का टर्म आ जाता है, एक 2 से आप अंदर इंटरनली मल्टीप्लाई कर देते हो, बट अगर दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो दोनों के 2 और रूट कैंसिल हो सकते हैं. यू कैन कंपेयर दीज 2 नंबर डायरेक्टली. ठीक है, तो चलो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमने मोमेंटम निकाल लिया था.
अब जब मोमेंटम हमने कैलकुलेट कर लिया है तो नाउ वी कैन कैलकुलेट हाउ मच एनर्जी मींस एनर्जी विच इज बीइंग गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन किया ना दैट इज डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन किया सो दैट इट कैन गेट आयोनाइज। इलेक्ट्रॉन हैज गेन द एनर्जी सो दैट इट कैन आयोनाइज। तो लूज किसने किया एनर्जी है? अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन किया तो लूज किसने किया है? Ion. Yes. So if the electron has gained the energy, that energy has come from somewhere, and that is from the ions, because previously there was nothing. That matter is stable. तो वहां का एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा था, तो एनर्जी लेके आने वाला कौन था? आयंस थे, and these ions start giving energy to the electron. So let us calculate how much energy is being gained by the electron, and that should be comparable to the ionization. Otherwise it will never being removed from the atom. गेन तो कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा एक ऑर्बिट पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी केसेस होते हैं, हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर ले, फॉर एग्जांपल 2s का इलेक्ट्रॉन है, उसने एनर्जी गेन करके 4s पे चला गया, बट वो रिमूव नहीं हुआ बिकॉज यू हैव नॉट प्रोवाइडेड दैट मच ऑफ एनर्जी। तो दैट इज पॉसिबल। आपका जो ट्रेजेक्टरी पॉइंट होता है उसके नियरेस्ट एटम में चांसेस होते हैं कि आयनाइज हो जाए, बट दोज एटम व्हिच आर फार फ्रॉम दैट दे डोंट आयनाइज, they go to the excited state and they can emit a radiation also, that is also possible। जब वो वापस इलेक्ट्रॉन जंप करके ड्रॉप बैक करेगा अपने ग्राउंड स्टेट पे, सो दे विल लूज द एनर्जी इन दैट आल्सो। सो देयर आर सेवरल वे, बट हम सो डोमिनेटिंग लेके चल रहे हैं ये वाला कंडीशन, जिसको हम कहते हैं एनर्जी लॉस्ट बाय द आयोनाइजेशन। एनर्जी लॉस्ट बाय द आयोनाइजेशन, तो दिस इज वी आर कंसीडरिंग कि डोमिनेटिंग होता है when you are considering the heavy charge particle which is entering into the matter। तो हम इसमें dominating एक condition लेके चल रहे हैं, ठीक है? It doesn't mean कि this is only the condition or this is only the interaction, there can be several other interaction also। Okay, so this delta E is nothing but how much momentum which is being given to the one electron, E square by 2me, simple formula, momentum का square divided by 2me, that is a highest value of kinetic energy that it can be given to the electron। So that will be equal to z square e4, जो हमने ऊपर calculate पहले ही कर लिया था, let me show you the term here also, this one, z4 2 e4 2 pi का square, epsilon का square, b का square and v का square। So let me just write in that way। So this will be 8 का टर्म आएगा, ओके, दिस 2 इज देयर एंड 2 पहले से एक था तो उसको 4 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करके 8 आ गया। 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर and b square v square and divided by this mass term is there, so mass m। ठीक है, okay, so this is the energy which is gained by one electron। Now the particle does not interact with one electron, it interacts with several electron at a time। तो वो इंटरेक्ट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से तो नहीं कर रहा है, जब वो मूव कर रहा है तो पार्टिकल आपका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इट इज इंटरेक्टिंग विद सेवरल इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट ओनली इंटरेक्टिंग विद वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट मींस first we have to find how many number of atoms or how many electrons or which electron is going to interact with these particles, which kind of electron is going to interact with these particles। So let us draw another diagram that will signify कि आपको कौन से एटम को काउंट करने हैं which from those atoms the electron is going to interact with this particular particle। The important thing is not the closest atom is going to interact and not the farthest atom is going to interact, only the intermediate atom is going to interact with respect to the trajectory। So let us make the diagram कि interaction होगा क्या। That will be obviously a cylindrical kind of interaction। पार्टिकल मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और वो पूरा सराउंडेड है एटम से, ठीक है? So that will do interaction with those atoms which are present in this region। ठीक है, यानी atom which are very close to this trajectory they don't interact,
those electrons don't interact, and atoms which are very far, they don't interact. So there is an interaction up to certain B impact parameter, and there is certain delta B. ठीक है? And this is your x direction where the particle is moving. So what is the volume of this shaded region? क्या है डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी? शेडेड रीजन का वॉल्यूम क्या होगा? सिलेंडर है, सिलेंडर में बीच में होल है, एंड रेडियस उसका b है, दूसरे सिलेंडर का रेडियस b प्लस db है, तो वॉल्यूम क्या होगा? एंड डिस्टेंस यू कैन दिस द पाथ लेंथ यू कैन इमेजिन एज डेल्टा x. ये डेल्टा x थिकनेस तक मूव कर रहा है, तो कितने एटम से इंटरेक्ट कर रहा है? वॉल्यूम क्या होगा इस सिलेंडर का? दिस इज ज्योमेट्री. It has nothing to do with the nuclear physics. Sir, pi dx into Pi dx means delta x into into 2b plus db. okay, 2b, sorry, 2b plus db. Yes, sir, plus db or into dr into db. Again db. तो बड़ा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये. पाई ठीक है, डेल्टा एक्स ठीक है, 2b ठीक है, b प्लस db into db क्यों है? Will it be not volume of cylinder is pi r square h होता है ना? यही होता है ना? पाई आर स्क्वायर एच ही तो होता है वॉल्यूम. इसमें स्क्वायर टर्म नहीं आ रहा, मतलब db और मल्टीप्लाइंग दीज टू इज नॉट गेटिंग मी कि ओके यू हैव कट एंड ओपनड इट, तो दैट इज अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में भी अगर इमेजिन करो हाइट क्या है, db है, ठीक है. ओके तो दैट विल बी, देखते हैं एक्सपैंड करके देखते हैं क्या आता है फॉर्मूला. 2b db तो टर्म एक आ ही जाएगा, 2 पाई b db डेल्टा x, यही आएगा ना? एक आएगा 2 db इंटू db. ओके यू हैव डन इन दैट वे कि आपने इसको कट किया फिर इसको ओपन किया, तो आपका एक क्यूबाइड बन गया. क्यूबाइड का आपका लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, और दैट इज गुड. तो एक टर्म इसमें और आएगा जो आपका db का स्क्वायर होगा, so that we can neglect that is equal to 0. we can neglect that one, so we can write only this one. Even you can find from this formula, इसमें भी एक db का स्क्वायर टर्म आएगा, so you can neglect that because पाई बी स्क्वायर तो आएगा, यहाँ पे भी पाई बी स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएंगे. 2 पाई बी वाला टर्म आएगा जो सस्टेन कर लेगा, और db स्क्वायर वाला जो टर्म आएगा उसको कैंसिल. so this is also good and this is also which you can use. okay so this is the volume of this one. Sir, and हाँ बोलो. सर बोलो. फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 2b के साथ आएगा. फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 2b, यस सर, बाद में उसको db मतलब बाद में बाहर वाले db से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो फिर db स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे. जब हम इसको पहले कट करते हैं, इसको अगर कट करके हम ओपन कर दो दैट बिकम अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का थिकनेस तो db होगा, दैट इज वेरी श्योर. उसका लेंथ क्या होगा? Sir, डेल्टा take pi and delta x common on the in the formula that you have written on right side, then it will become a square minus b square, then it will be a plus b and a minus b. ओके. मैं देखो मैं तो यही यूज कर रहा हूँ. दिस इज करेक्ट, दिस इज ओके ना, दिस वन. Yes sir. ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है. सर इसमें तो pi delta x कॉमन ले लो, अच्छा वो चाहे उसने वो ऐसे लिया है, b ठीक square minus b square बन जाएगा. ठीक ठीक है, समझ गया. ठीक है, तो मतलब हमारा मेन है कि ये आ गया. इज इट ओके? ये तो ठीक है. 2 पाई बी Yes sir, db finally. फाइनली ये आएगा ना. उसने दूसरे तरीके से बताया, बट दिस इज द इक्वेशन व्हिच वी हैव टू यूज बिकॉज़ देयर इज टू सिलेंडर्स
and they have an inner radius and outer radius. So in that we have to take the shell of the cylinder kind of thing. So total volume minus the central volume. So you will get the volume of this one. That is what the simplest way of doing. Okay. So if we know how many number of atoms are there per unit volume, then we can easily find that how many atoms will interact with this particular particle or particular ion. क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाल लिया और इस अगर हमारा डेंसिटी हम नंबर डेंसिटी हमको पता है एटम का कि कितने एटम प्रेजेंट हैं इन पर यूनिट वॉल्यूम, सो जस्ट मल्टीप्लाई द वॉल्यूम. So that much number of atoms or that much number of electrons means those electrons which are in these atoms will go into the interaction. So we are very sure we can easily find this small dn. ये dx नहीं है, थोड़ा सा मैं लिखने में इसको मैं दूसरे कलर से यूज कर लेता हूँ so that it will be a different one. So dn is number of atoms present in this particular shaded volume. So that will be equal to number density and multiply with the dv. तो इस जो भी आपका मटेरियल चूज आपने किया उसका एक नंबर डेंसिटी होगा मल्टीप्लाई विद dv. नॉर्मली दिस नंबर डेंसिटी अगर स्मॉल एन में भी बुक में लिखा रहता है और कई बार वो दूसरे सेंस में भी लिखा होता है, दैट इज z कैपिटल N dv. This is concerned with electron. This is number of electron per unit volume, and this number is same as this small capital N is number of atom per unit volume. So now the equation is clear. Every atom has z number of electron or z dash. Z dash लिखने का meaning इसलिए है because here z is already used. So we are writing z dash. Z is for the incoming particle and z dash is the for the those which is in the matter. दो atom जो आपके matter में present है, यानी उसमें lead हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोई भी आपकी शील्ड हो सकती है. तो शील्ड का z डैश है और ये वाला जो z है आपके ये वाला z है. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस करने के लिए we have written z dash. So now it is clear how many electrons are there present in this volume and how many atoms actually. जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं, एटम में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो कोई आपका 1s का इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर सकता है, 2s का कर सकता है, 3s का कर सकता है, 2p का कर सकता है, 3p and so on. So you can have several different orbital electrons that is going to interact with the incoming radiation. So you can write in this way also, you can write in this way. जब आप small n के terms में लिख रहे हो तो आप number of electron per unit volume लिखोगे, और जब capital N के terms में लिख रहे हो तो number of atoms per unit volume लिखो. But number of atoms को आपने उसके individual number of electrons से multiply कर दिया तो you get the same thing. Clear? Okay. So dn भी हमारा calculate हो गया. dn का actual formula हम लिख सकते हैं. मैं small n के terms में ही चलूंगा. ठीक है, small n. x से ना confuse हो जाए. Let me write in a proper way. Small n 2 pi b db delta x. ठीक है. Is it clear? Is it clear? So now the capital delta E will be equal to small delta E. मैंने small delta E use किया था, delta E with suffix E into dn. Now you integrate how many electrons have took part in the reaction. Just do the integration, and the total energy which is gained by all the electrons will be equal to this one. And if this number matches with your energy or kinetic energy of the incoming radiation, the radiation or the particle will stop within the matter. यानी आपको क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन ने इतना एनर्जी कंज्यूम किया तो just count, just do the integration that how many electrons are needed to make this delta E equal to the kinetic energy of the incoming radiation or incoming particle. तो एक बार जब वो इक्वेट हो जाएगा तो you can easily find कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करने के बाद it will stop. So it can go up to this much of distance. You can easily calculate. If you know this function कि भाई अब delta E कैसे change हो रहा है as you move on, then you can easily find कि up to what distance you are going to enter into the matter. ठीक है, तो एक बार जरा इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना होगा. So you just do the integration. You put all the values. Delta E हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था, which is this one. This number we have to put, and we have to put delta n, which is this number. तो एक बार जरा दोनों को डालते हैं और देखते हैं क्या हमारा फॉर्मूला बनता है. This is z square
E4 divided by 8 pi square epsilon naught square me, which is mass of electron, and v square was there. ये टर्म तो हमारे कौन से थे, डेल्टा ई वाले, मैंने सारे टर्म इंक्लूड कर दिया. ZE4 8 pi square epsilon naught square me, अच्छा b and v square is there and b square is also there. So b square we have to write. Okay, and we have to write 2 pi b db, and there is small n and delta x, and this is the integration. ये भूल गया मैं integration लगाना. Okay, so most of the things are means constant, so that is z square e4 divided by 8 pi square epsilon naught square me square v square, and now b is different because we have to find key up to what b the things are included, यानी आपने कब तक कितने b की वैल्यू के लिए आपने, तो b has to be variable and there is integration with respect to delta b. So we can pull out delta x also, which is independent. Distance के according आपका b decide नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए delta x can be pulled out. Small n which is here, and we also pull out 2 pi which is there, and we are left with integration. b square नीचे है, b ऊपर है, तो that is 1 upon b, इसको लिख देते हैं db. So this is the integration we are left with, and we don't know what is b. ठीक है, यहाँ तक सारी कहानी लिखने के बाद हम, लेकिन इंटीग्रेशन का हमारे फंक्शन पता है, 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of x होता है, so that we can easily write. So this is equal to this whole of the constant, जिसको मैं अब लिख देता हूँ आपके लिए k, ताकि मेरे को easy लगे, बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो I'm writing k, and k ln of b maximum divided by b minimum, b minimum and b maximum. क्लियर, क्योंकि db का इंटीग्रेशन है तो एक b मिनिमम और एक b मैक्सिमम वी कैन यूज, कि कितना मिनिमम से लेकर के वो जो आपका शेल है, जो सिलेंड्रिकल शेल बन रहा है या सिलेंड्रिकल बॉडी बन रही है, वो एक उसका एक मिनिमम भी होगा, एक मैक्सिमम भी होगा. ऑल दोज एटम्स व्हिच आर कमिंग विद इन दैट रेंज, दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट. सो दिस इज कॉल्ड, ओके, इसमें मैंने k को ऐसे नहीं लिखते हैं, k को हम डेल्टा x को अलग रख देते हैं. डेल्टा x मैंने ये रहा, डेल्टा x है ना, उसको मैंने अलग रखा है, बाकी टर्म्स को मैंने k का है, एंड डेल्टा e, because this term is very important. Delta E by delta X, that is equal to K ln of this B by B minimum and maximum. ठीक है, per unit distance how much energy is being transferred to the electron, this function is going to give you how much energy being transferred when the particle has moved to a unit distance. तो per unit distance के रिस्पेक्ट में इसी को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. अभी थोड़ा सा और है, इसमें एक नेगेटिव वैल्यू में ऐड करनी है, दैट वी विल डू टुमारो, नॉट टुमारो, दैट वी विल डू ऑन सैटरडे. तो इसी नंबर, अभी तो ये सिर्फ हमने उस टर्म में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स ने कितनी एनर्जी गेन की, एंड दैट विल बी इक्वल टू द लॉस बाय द आयन. तो यहाँ पे माइनस टर्म आ जाएगा, तो दैट वी विल डिस्कस इन on Saturday. On B maximum और B minimum को भी discuss करेंगे. What are the value of B maximum and B minimum? What value we should use as a B minimum and what value we should use as a B maximum? Then we can write the final equation, which is called as Bethe Bloch formula for the stopping potential. So we have partially done that, but still we are left with certain more term. Okay. आज के लिए हम इतना ही करते हैं. Let me stop the recording. Time भी 1 मिनट ऊपर चला गया है. Although we have started 10 minutes late, but it's okay. I'm stopping the recording.